Genevieve, so welcome back again. I welcome you on this fifth week of the second batch at Action Academy. Uh, we are into the series of prepositions. This is a third lecture on this, and probably we'll have yet another preposition lecture, and then we'll wind this up, and then we might be having a couple of weeks more, and probably they are assigned for error detections and a bit of um, punctuations, probably. So this is the uh, agenda for the coming 2 weeks that we will be having, right? Um, so for the prepositions, we have discussed some of the prepositions that included on, into, and inside, and even in and at, right? So now we as we've already discussed the concept of in and at, but there's the mixture of these two as well when it comes to the places, right? So we use in for the locations and for the specific uh, places, right? Okay, for example, uh, I am at Clifton, and the Clifton is in Karachi, right? So आपने uh, आप किसी को लोकेशन बता रहे हो, एक आप लोकेशन बता रहे हो कि भाई आई एम एट कराची। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कहा ना कि आई एम एट कराची, राइट? अब ये जो सेंटेंस है ये दैट इज दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस, राइट? लेकिन अब इसमें सीन यह है कि कराची में स्पेसिफिक आपने जगह नहीं बताई। आपने लोकेशन तो बताई, ठीक है, लेकिन आपने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि कराची इज द बिगेस्ट सिटी, राइट? एंड देयर आर मोर स्पेसिफिक प्लेसेस। तो जब आप कभी भी किसी भी चीज को स्पेसिफाई करते हो, देन आपके स्ट्रक्चर में एट भी आता है और इन भी आता है। तो आप जो स्पेसिफिक लोकेशन बताओगे, पहले वाली एक बड़ा पिक्चर, एक पूरा कराची, एंड देन कराची के विद इन स्पेसिफिक प्लेस। तो पहले उस वाले की जगह पे जो आप स्पेसिफिक करोगे उसकी जगह उस पे एट आएगा, और जो बाहर वाला है उस पे इन आएगा। तो ये वाले जो हैं क्या है कि ना, अ, इनके जो है मिक्स्ड यूजेज हैं, यानी कि एट और इन दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। प्रोबेबली होता कम है, लेकिन आपको ये यूजेज जो है पता होना चाहिए, राइट? सो अगेन, जस्ट फॉर द समराइजेशन ऑफ दिस स्लाइड, एंड दैट इज के इन और एड का यूजेजेस दोनों साथ में हो, तो हम जो है दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं। लेट से अगर मैं फॉरेन में हूँ, लेट से, ठीक है, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ और मैं किसी को अपनी लोकेशन बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। सो आई बी टेलिंग देम, या मैं उनको लेट से अगर मैं सिंध में हूँ और किसी को मैं लोकेशन बता रहा हूँ, किसी बाहर वाले को, ठीक है, तो उसको मैं कहूँगा कि आई एम एट सिंध इन पाकिस्तान। तो सिंध इज, ऐसे समझिए कि आप इज सबसेट ऑफ पाकिस्तान, राइट? तो जो जो छोटा सेट होगा इन द मैथमेटिक्स लैंग्वेज, जो छोटा सेट होगा उसके साथ एट आएगा, एंड जो बड़ा सेट होगा उसके साथ इन आएगा, राइट? सो लाइक आई एम आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। अब स्कूल इज द बिगेस्ट थिंग, स्कूल इज द बिगर सेट, एंड कैंटीन इज द सबसेट ऑफ, यानी कि कैंटीन इसका स्कूल का पार्ट है। अब मैं किसी को स्पेसिफाई जो है क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं इस जगह पे हूँ। सो इट विल टेक आई एम एट कैंटीन एंड इन द स्कूल। सो दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। Okay, जी, can you fill up the others?
please be quick because they aren't much. Very good. Yeah, very right. Yes, very right. Yes. Okay. Add, very right. Add, very. No, no. They are the separate sentences. Three is a separate sentence, and four is a separate sentence, and and they will carry different, uh, you know, prepositions. They aren't like combined. Standing at the main gate. Very good. Yes, yes. Thank you for your inputs. You're absolutely right. So they live at Ayub Gate in Sakhar. The watchman is standing at the main gate because now you have this main gate is the location. So for location, you always so there when there is a single thing na you always put at, right? और जब आपके क्या होता है कि सबसेट का चक्कर हो ना तो फिर उसमें आप एट इन दोनों लगाते हो. So we met uh, we met at the coffee shop. So this will be the location wise. Absolutely. I'm a library in in IBA University, right? So you are in IBA and in IBA you are at library. So very well done. That's how the combinational of these two in and at works for the places. Okay, these are prepositions of place, jagah. So this was something that has to be covered when we've been done with the in and at. Okay, so the next one is with, right? Um, with is actually it's it shows actually the connections, the associations, right? When one thing has a connection with someone else, and when there are two things and there's a connection or there's an association between the two, and then you use with, right? I am with watch. I am with watch, for example. This means I am wearing watch. Yeah, I'm having connection with the watch. My body is in connection with the device and with the material or with anything that is watch, the wearable. Energy, sorry for the delay. Who I have to adjust this one. Okay, no worries. So, okay, so there are a couple of uses of with. So one is used to show feelings. With is used to show feelings. Like I am happy with him. Like you're showing happiness. Happy is a feeling, right? So I'm happy with him. My father is furious with me. Furious is a feelings. So you always take with when there is a feeling. I'm very satisfied with my life. So you always take
Satisfied is a feeling. So you always have with. But there are exceptions, and exemptions are like these are some of the three words that doesn't, they are feelings, but they doesn't use with. So it's like rude, like rude, polite, kind. They always use to. Like he was very rude to me. He was very polite to me. He was very kind to me. So these three probably words have a usages of to with them, but the other they always carry, if there are feelings, they always carry with. Then we use for tools like कोई आपने काम किया और किस से किया, किस टूल से किया या किस इंस्ट्रूमेंट से किया, you always use with. I wrote a letter with a pen. Okay, so आपने जो मैंने खत लिखा वो पेन से लिखा. He killed her with a sword. Sword. A sword is a tool. So with, you always use tools. When there's a tool, you always use with. Use for possessions. Possessions is जो आपकी आपके आपकी मिल्कियत हो, जिस समय आपके अंडर हो, पोजेशंस में हो, तो उनके साथ भी आप विद लगाते हो. लाइक आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास घर हो और उसके साथ गार्डन हो. विद अ गार्डन, आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन. पोजेशन, चाहना इज अगेन आप आपके अंडर है. विश, I want a life with happiness. I want to pass with good marks. So these are the possessions. These are likings. These are wishes, sort of. And for the agreeness, when you agree with someone, you also use with. Like, I am with you. I agree with you. Right? So I second you. I second with your idea. So I second is like I agree with your idea. So they always have the usages of with. Yes, बच्चों ये जो हमने फीलिंग्स में बात की ना, तो मैंने कहा कि ये जो एग्जेम्पशन है ना, एग्जेम्पशन का मतलब होता है इनके साथ रूड, पोलाइट, काइंड, ये भी फीलिंग्स हैं. ठीक है, लेकिन इनके साथ विद इस्तेमाल नहीं होता. ये एग्जेम्पशंस हैं, इनके साथ टू इस्तेमाल होता है. टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है इन तीन के साथ. जिस तरह रूड, ही वॉज वेरी रूड टू मी. रूड टू आएगा, रूड विद मी नहीं आएगा. ही वॉज वेरी रूड टू मी. ओके, ही वॉज वेरी पोलाइट टू मी. ही वॉज वेरी काइंड टू मी. तो ये ऐसा नहीं होगा ही वॉज वेरी काइंड विद मी, ही वॉज वेरी पोलाइट विद मी. तो आप कहेंगे सर ये है तो फीलिंग ही, लेकिन फिर भी इसके साथ विद नहीं आ रहा. तो दीज आर द एग्जेम्पशंस. दीज आर द एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन वो होती हैं कि जो इस रूल के अंडर लाए ना करते हों. तो दैट्स हाउ इट इज. तो whenever I provide you these notes, और जहाँ पे आपको ये जो चेंज ऑफ द फॉन्ट्स कलर हो ना, तो आप उसको थोड़ा सा वहाँ पे फोकस करा कीजिए कि भाई ये जो है थोड़ा सा, ये रेड होता है, रेड इज द यू नो साइन ऑफ डेंजर. ओके, तो और जब ग्रीन हो तो उसका थोड़ा सा इट्स साइन ऑफ होप, इट्स साइन ऑफ पॉजिटिवनेस. तो ये मैं अपने नोट्स में कलर्स इस्तेमाल करता हूँ ताकि यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स इजीली. जब भी आप पढ़ते हो ना, तो फिर आप अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो, मार्कर बनाते हो. तो इसलिए मैं भी जो है ना ये इस्तेमाल करता हूँ ताकि जब भी आप उसको देखें तो चीज़ें आपको एकदम से रिवाइज हो जाएं. Okay, so now we will be discussing the concept of of. We use the preposition of
So let's see what it holds. So for the indication of possession or ownership, again, कोई एक चीज जो आपकी हो, जो आपकी हो, like the book of the teacher is on the desk. The book of the teacher, जो बुक है वो टीचर की है, का होना, right? The bag of of um, of Shakir, let's say the bag of Shakir, तो the bag जो है वो शाकिर का है, you know. So इस तरह ये ऑनरशिप है. ऑनरशिप आपकी ऑनरशिप ये है कि भाई जो आपकी मिल्कियत हो, जो आपका ही हो, इस तरह. The laptop of the particular बंदे, तो इस तरह इनके साथ ऑफ आता है ऑनरशिप. जब भी आपको इंडिकेशन आ जाए स्पेसिफिक टू ऑनरशिप ऑफ, इंडिकेटिंग मटेरियल और कंपोजिशन, कोई भी एक चीज जो जो किसी चीज से बनी हो, मटेरियल या कंपोजिशन. द रिंग, अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड. अब जो रिंग है उस पे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है या उसकी कंपोजिशन इस्तेमाल हुई है वो गोल्ड है. A ring made of gold sparkled on on her finger. Sparkled on her finger. So यहाँ पे हमारे जो फोकस है इट्स ऑन अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड. तो जो रिंग है उसका जो मटेरियल है वो गोल्ड से बनी हुई है. तो उसकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन कहते हैं कि भाई एक चीज के बनने का अमल, कंपोज, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. तो अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, a wire made of copper, right? A cloth made of silk, all right? इस तरह के जो कंपोजिशनल सेंटेंसेस होंगे, दे ऑलवेज, यस. तो आप इसको कहेंगे अ पेन मेड ऑफ प्लास्टिक राइट्स ब्यूटिफुली. ये एक सेंटेंस बन सकता है. अ पेन मेड ऑफ प्लास्टिक writes beautifully. That's how you can make a sentence for the example that you have given. Okay, ji. Indicating a relationship or a connection. Again, more sort of relationship. अगर आपको दो नाउन दिए गए हों या दो प्रोनाउन दिए गए हों या एक नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो, उनके दरमियान कोई कनेक्शन हो, कोई रिलेशनशिप हो, स्पेशली रिलेशनशिप, यू ऑलवेज यूज ऑफ. द सिस्टर ऑफ जॉन is a doctor. There's a John and there's a sister, right? So there's a connection, there's a relationship between these two, John and the sister. So the sister of John is a doctor, right? The brother of Ali is an engineer. So it shows the relationship, the brother, the sister, the daughter, the son, this any relationship that you can take, right? So always relationship के साथ भी you always put a off. Okay जी. When there is a time, when there is an age, when there is a duration, then you will also be using the concept of which depends upon the sentence. Like the concert will start at the end of the month. At the end of the month. At the end of the month. This is you are indicating a particular time. कि कब start होगा. He is singing. He will sing till the age of 45. He will work till the age of age of 60. This program is of 3 months. This program is of 3 months. Right? So you are telling the duration कि भाई ये 3 महीनों का प्रोग्राम है, तो उसके साथ भी you always use of. The program is of 3 months. This lecture is of 3 hours. Right? So you are telling the duration.
ओके जी. And then we have a last one of the off, and that is cause or a reason. लाइक कोई भी एक काम हुआ हो और उसका कोई वजह हो तो उसके साथ वजह के साथ जो है ऑफ लगता है. शी डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, यानी कि वो जो मरी वो हार्ट अटैक से मरी. तो एक एक्शन हुआ, मरना हुआ, और उसकी रीजन या उसका कॉज क्या हुआ, सो वी यूज ऑफ. लाइक शी डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, एंड एंड इट रेन्ड ऑफ अ क्लाउडी वेदर, यानी कि रेनिंग का होना दैट वाज बिकॉज ऑफ द क्लाउडी वेदर. तो जब भी ऐसे कोई सेंटेंस हो जिसका आगे से उसका कॉज दिया गया हो या उसकी रीजन दी गई हो, वी यूज ऑफ. Okay, जी, so the next one is the next preposition is for, for. So we use for to talk about a purpose or a reason of something. किसी का कोई पर्पस, ठीक है, और या उसकी कोई रीजन के लिए we use for है, right? And used, for is used. अब इसमें multiple rules हैं, so we will be discussing some of them. That is used for saying who or what is intended to receive something or get the benefit of. Benefit, यहाँ पे the purpose, यहाँ पे जो purpose है ना, that is to get benefit. Like I have brought a cup of tea for you. अब you is getting the benefit and that is to have a cup of tea. तो इसके साथ we always use for. Claudia, this present is for you. This gift is for you. All right. And so, what can I do for you? What can I do for you? Right? So we will use for. तो इस पे आप जो है ना हैक भी निकाल सकते हैं, भाई एंड में यू हो तो उसके साथ फॉर ही आता है. ठीक है, लेकिन मतलब ये स्पेसिफाई नहीं है. जैसा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, देखो, अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, दिस इज टेकिंग विद व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, राइट? तो आप जब भी प्रीपोजिशनल के लिए ना हमेशा 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 पूरा सेंटेंस पढ़ के देन यू डिसाइड द प्रीपोजिशन. कभी भी जस्ट आप एक वर्ड के पीछे कभी भी ना जाएं कि जो है आ, ये वर्ड लगा होगा तो हम जो है ना ये करेंगे, ये वर्ड लगा हो तो ये करेंगे. नो, दिस हैक विल, ये जो आपके हैक्स होते हैं या ट्रिक्स होती हैं, ये चंद एक चीज़ों के लिए काम कर सकती हैं लेकिन ये जनरली नहीं होती. सही है. मैथमेटिक्स में जो ट्रिक्स होती हैं वो जनरली काम कर जाती हैं हर एक उसमें, लेकिन फॉर लिटरेचर इट्स नॉट लाइक दैट. और लिटरेचर में कोई जो है ना हैक है ही नहीं एक्चुअली. वो हम हैक्स इसलिए बनाते हैं कि भाई हमें हमें खुद अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो बस. बाकी इन जनरल इन रियल देयर आर इन हैक्स. I've taken few rides for you. Yes, I've taken some rides. दिस विल बी द करेक्ट वन. यस, यानी कि मैंने आपके लिए कुछ चावल निकाले हैं, यानी कि इस सेंटेंस जो आपने मुझे भेजा है ना, इसकी ट्रांसलेशन यही होगी. तो आप लिखेंगे आई हैव टेकन सम राइस फॉर यू, आई हैव ब्रॉट सम राइस फॉर यू, ऐसे. मैं आपके लिए कुछ चावल लेके आई हूँ. एंड अगेन अगेन फॉर द बेनिफिट, द बेनिफिट इज द राइस, द हैविंग ऑफ राइस. ओके जी. यूज फॉर स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का पर्पस या उसके एक्शन के लिए वी यूज फॉर. वी यूज द बेसमेंट फॉर स्टोरेज. अब जो बेसमेंट का काम है उसका पर्पस क्या है, दैट इज फॉर स्टोरेज. सो बेसमेंट इज द ऑब्जेक्ट एंड इट्स पर्पस इज टू स्टोर थिंग्स, राइट? इसका जो एक्शन है दैट इज टू स्टोर. द रेड बटन इज फॉर टर्निंग द मशीन ऑफ. अब देयर इज अ रेड बटन और उसका काम इज
टर्निंग द मशीन ऑफ, मशीन को बंद करना, तो वी यूज फॉर. तो अगेन इट्स जस्ट फॉर द पर्पस, द रेड बटन एंड द machine. So they both are likewise. Use for doing something for others. When you do something for others, you always use for. Like I'll do it for you. We'll have to do it for us. They will have to do for Pakistan, right? तो जब आप कुछ काम करते हो किसी और के लिए, तो we always use for. I will do your work for you. तो ऐसे. For saying how long समथिंग लास्ट्स और कंटिन्यूज, कोई एक चीज कितने दौरानिया तक या कितने टाइम तक कंटिन्यू रहेगी, तो वी ऑलवेज यूज फॉर. लाइक देयर हैव बीन ड्राउट कंडीशन फॉर द लास्ट 2 summers. 2 सालों से खुश्क साली छाई हुई है. देयर हैव बीन ड्राउट कंडीशंस. आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 minutes. मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ. तो कर रहा हूँ का मतलब यह है कि फॉर 20 minutes के मतलब कि ये आपने दौरानिया बता दिया कि आप कब आए और आपको 20 मिनट हो गए हैं अभी, एंड यू आर स्टिल बीइंग वेटिंग. आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 minutes. So that's how there's a usage for. This is the usage of for. I'll be taking the questions in case you have after this. Further. Okay. 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 From से पहले okay, we use for to, then I'll be back from, because from will have a couple of more minutes. Okay, so अच्छा जी. So the use of to. So used to indicate the place, person, or thing that someone or something moves toward, or the direction of something. For example, I'm heading to the entrance. I'm heading to the entrance. आपकी direction. I'm moving to Karachi. आपकी direction. I'm heading to the entrance. The package was mailed to Mr. Kim. To. Again, it was sent to, it was moves towards. So when you got the moving sense, so we always use to. All of us went to the all of us went to the movie theater. All of us went to the movie theater. हम movie theater गए. Please send it back to me. उसे मेरे पास वापस भेजो. Send it back to me. Return. Used to indicate a time or an ending point. A time. Used to indicate a limit. Sorry. Used to indicate a limit or an ending point. यानी जब भी कोई एंडिंग पॉइंट हो उसको बताने के लिए वी ऑलवेज यूज टू. लाइक द स्नो वाज पाइल्ड अप टू द रूफ. अप टू द रूफ. अप टू द रूफ मतलब ये है कि अब बस रूफ इज द एंडिंग पॉइंट. एक बिल्डिंग होती है, उसकी छत उसकी आखिरी जगह होती है, एंडिंग पॉइंट होता है, लिमिट होती है. ऑलराइट. सो जब भी आपके पास एंडिंग पॉइंट का सीन आ जाए, यू ऑलवेज यूज टू. The snow was piled up to the roof. The stock prices rose up to $100. Now the limit is $100. Rose up to $100. So जब भी आपके पास इस तरह की एंडिंग पॉइंट हो या कोई ऐसी लिमिट हो, so we always use to. अब again there is a relationship. See now, अब ये वाला रिलेशनशिप देखें how it works. This letter is very important to your admission. So आपकी एडमिशन और आपकी लेटर में रिलेशनशिप है. ये देखें, योर लेटर की बुनियाद पे ही आपकी एडमिशन होगी. सो देयर इज अ हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप. ठीक है. एंड दिस लेटरशिप इज नॉट ऑफ
of the kin and Keith. अबाव अजदाद वाला रिलेशनशिप नहीं है, नॉट अ फैमिली रिलेशनशिप, दिस इज जस्ट a relation as a sort of hypothetical. My answer to your question, right? अब of course जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर होता है. So my answer to your question is in this envelope, right? And this can also be, my answer to your question is inside this envelope. They both will be absolutely correct. Do not respond to every little thing in your life, right? So responding and every little, हर छोटी चीज पे रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता. So there is a relationship. So do not respond to every little thing in your life. And then use to indicate a time or a period, right? जिस तरह it was 9 to 6, 9 to 6 का मतलब, सॉरी, आई वर्क 9 to 6. अभी आपने एक पीरियड बता दिया कि मैं 9 से 6 बजे तक काम करता हूँ, 9 to 6, मंडे टू फ्राइडे, राइट? तो आपने एक पीरियड बता दिया कि भाई मैं इस ड्यूरेशन तक काम करता रहता हूँ. मैं 9 बजे आता हूँ एंड 6 बजे मैं काम से घर वापस जाता हूँ. आई वर्क 9 to 6. आई वर्क मंडे टू फ्राइडे एंड देन सैटरडे संडे इज ऑफ, likewise. And then it is now 10 to 5. दिस मीन्स 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं. तो इन अदर वर्ड्स अभी जो टाइम हुआ है दैट इज 4:50. इट इज नाउ 10 to 5. 5 बजने में अभी 10 मिनट पड़े हैं, 10 मिनट बाकी हैं. सो दीज सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज टेक 2. ओके, एंड देन we have these 3 combinational concepts. Because I've got 5 minutes left, so I think we can cover up this one as well, and then I'll be taking your questions. So as we discussed on, and now it will be over and above. So um, on is the thing which is in contact, all right, which is in contact. Surface, ये surface और कोई भी इसके साथ अटैच हो, कांटेक्ट हो, वी ऑलवेज यूज ऑन. ओवर ऐसी चीज जो कि किसी एक चीज के ऊपर हो, लेकिन लेकिन वो जो है क्या हो, मूविंग कंडीशन में हो, तो वी यूज ओवर. फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. ऑन की पहले, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक और टेबल आपस में अटैच्ड हैं, राइट? उनके दरमियान स्पेस नहीं है. और इस तरह अगर कोई एक चीज उसके ऊपर जा रही हो, तो हम ओवर लगाते हैं. द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, बिकॉज जंपिंग इज ऑल रिलेटेड टू मूवमेंट. तो जब भी कोई चीज ऊपर से मूवमेंट में हो, वी ऑलवेज यूज ओवर. और जब भी कोई एक चीज किसी सतह से या किसी भी पर्टिकुलर चीज से ऊपर हो, ऊपर का मतलब ये है कि कांटेक्ट ना हो, देयर इज अ स्पेस, सो वी यूज अबव. और वो स्टिल हो, मूविंग ना हो. So that is how there is a difference in between these two. Let's discuss some of the examples. The book is on the table. The cat is sitting on the chair. So there is a chair and the cat is sitting, and the cat and the chair, there isn't any space in between them, and there is a touching between the cat and between the desk. So we always use the cat is sitting on the chair. अब ओवर में we discuss the concept of movement. The dog is jumping over the fence. Jumping.
The bird is flying over the building. Because of the movement of the bird, the movement of the subject, we always use over. Clouds are above the building. There's a building and the clouds and the buildings are not in touch, but it's above and they are in static mode. They're in a static position. So we use above. The clock is above the shelf. There's a shelf and there's a clock. So, and there's a space in between these two. We use above. The picture is hung above the window. The picture is, the picture is hanging. The picture is there, which is hanging above the window. There's a window and there's a picture. So, window or picture academia, there's a gap, and so it will take the above preposition. So these were three, and this actually will give you the concept of, um, um, you know, these three. And of course, um, these uh, these words are also important. Like sitting is something, in context. Sitting gives you the concept of intact. Jumping gives you the concept of movement. Flying gives you the concept of movement. Right? The clock and the shelf. So it could be the clock is on the shelf, but again, for the specifications, सवालों में हमेशा पता होता है. The picture is hung above the window for general purpose. So that's how these three have very much difference in between them.